तो हेलो स्टूडेंट, आई एम डी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली एक बार फिर से। और आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी 11th का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन बुलेट्स वन। तो आज देख लीजिए, यह है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट। ओके, जिसमें हम इस चैप्टर का जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है वो पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो है ये: अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फूड, शेल्टर एंड क्लोथ। ओके, अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था किसमें? रोटी, कपड़ा एंड मकान। एक फिल्म भी आई थी ना, रोटी, कपड़ा, मकान। सो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फूड, शेल्टर एंड क्लोथ। उसके बाद सेकंड पॉइंट, एरिस्टोटल ने देन मोर साइंटिफिक वे दिया ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसने क्या किया कि प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री में डिवाइड किया, एंड एनिमल्स को एनाइमा एंड इनाइमा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड और एब्सेंस ऑफ आरबीसी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लीनियस लीनियस ने क्या दिया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या क्या? प्लेंटी एंड एनिमलिया, बट डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आर एच विटेकर ने क्या दिया था 1969 में? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या क्या? मोनर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमलिया। और किसके ऊपर बेस्ड? पीसीएमबीआर। पीसीएमबीआर मींस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सेल स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन। ओके, पीसीएमबीआर के ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट पॉइंट जहाँ क्वेश्चन बन सकता है: बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म are kept under the plant kingdom in earlier classification because of they all have cell wall. Okay, and next one, prokaryotic bacteria, blue green algae and eukaryotes are present together in earlier classification. Next point, chlamydomonas, which is an unicellular, and spirogyra, which is a multicellular, are present, are placed together in algae. Okay, फंजाई, फंजाई का सेल वॉल क्या? मेड अप ऑफ काइटिन। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो फंजाई का जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन क्या है? काइटिन इज होमोपोलीसेकेराइड ऑफ नाग एंड नाम। नाग एंड नाम मींस एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन, किंगडम मोनेरा। सो किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ऑल आर प्रोकैरियोट्स। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, bacteria. Bacteria are the sole member of kingdom Monera and are most abundant microorganism, occur almost everywhere. And handful soil में कितना है? Hundreds of bacteria. Okay, एक मुट्ठी सोइल में, मिट्टी में कितना बैक्टीरिया? Hundreds of bacteria. Okay, ये डायलॉग भी बन सकता है, एक मुट्ठी सोइल में hundreds of bacteria. Next point, bacteria have four groups. क्या? Spherical cocci, rod से bacillus, comma से vibrium and स्पाइरल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या? उसका स्ट्रक्चर जो है इज वेरी सिंपल बट बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया हैव मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ओके, बैक्टीरिया हैव मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में मेजोरिटी क्या है? मेजोरिटीज आर हेटेरोट्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आर्कीबैक्टीरिया आर स्पेशल। Why? Because they survive in most harsh habitat because of the cell wall structure। कहीं कहीं पे सेल मेम्ब्रेन भी मिलेगा। एक PYQ का क्वेश्चन था, उसमें सेल मेम्ब्रेन दिया था। तो अगर सेल मेम्ब्रेन दिया हो तो हो जाएगा, अगर वो नहीं हो तो सेल वॉल। ओके, अब आर्की बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग में रहता है उसे क्या बोलते हैं? थर्मोएसिडोफाइल्स। एंड जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में उसे हेलोफाइल्स। एंड जो मार्सी एरिया दैट आर मेथानोजेंट्स। Next point, methanogens are present in the gut of the ruminant animal also, like cow and buffalo, and produce methane from the dung of these animals. Okay, that is also used as biogas. Okay, and eubacteria are the true bacteria. Okay, अब eubacteria are the true bacteria and
characterized by the presence of the rigid cell wall. Okay, next point, most of the eubacteria are, जो मोटाइल eubacteria है have flagella. of course बात है जो मोटाइल होगा उसमें flagella होना ही होगा. Next point, cyanobacteria, which is a blue-green algae, have chlorophyll A. That's why it is a photosynthetic autotroph. Okay, so next point यहाँ से क्वेश्चन बनेगा. Blue-green algae, इसका कैरेक्टरिस्टिक, it can be unicellular or colonial. It can present in fresh water as well as marine water, also in terrestrial water. Sorry, also in terrestrial form. Okay, and it is not an algae. Sorry, in terrestrial. Next point, ब्लू ग्रीन एल्गी में जो कॉलोनीज होता है, द कॉलोनी आर सराउंडेड बाय द जिलेटिनस सीड. ओके, तो जो ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं उनका जो कॉलोनीज होता है वो आर सराउंडेड बाय जिलेटिनस सीड एंड आर often form the algal bloom on the polluted water bodies. Okay, that is known as algal bloom, and it is harmful for both plant and animal. ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नहीं दिया है, पर इकोलॉजी के लास्ट चैप्टर में ये दिया हुआ है. ओके, सो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें कुछ सम ब्लू ग्रीन एल्गी कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. कहाँ पे? इन देयर स्पेशलाइज्ड सेल व्हिच इज नोन एज हेटेरोसिस्ट. एग्जांपल क्या है? नॉस्टॉक एंड एनाविना. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. और नेक्स्ट पॉइंट, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या करता है? ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस like nitrate, nitrites and ammonia and use the release energy for their ATP production. Okay, next one, chemosynthetic autotrophic bacteria help in nutrient cycling of nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. Next point, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, और उसमें भी मेजॉरिटी कौन है? डिकम्पोजर. ओके, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, बट हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया में भी सबसे ज्यादा क्या है? डिकम्पोजर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मेनी डिकम्पोजर क्या करता है? मिल्क टू कर्ड, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, एंड एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो fix the nitrogen in the root of the legumes, and some are pathogen which cause disease in human, crops, farm animals and pets. Okay, next point जहाँ क्वेश्चन बनेगा, बैक्टीरियल डिजीज जो दिया है क्या क्या? कॉलेरा, टाइफाइड, टिटेनस एंड सिट्रस कैंकर. ओके, ये जो कॉलेरा है, कॉलेरा, टाइफाइड, टिटेनस, ये तो एनिमल का डिजीज हो गया, एंड सिट्रस कैंकर प्लांट्स का होता है मेनली. ओके, सो कॉलेरा इज कॉज्ड बाय Vibrio cholerae, typhoid is by the Salmonella typhi, and tetanus is by the Clostridium tetani, and this citrus canker is caused by the Xanthomonas hexapodes. Okay, and next one, bacteria reproduce mainly by the fission. Okay, mainly by the fission, and sometimes spore formation when in unfavorable condition. Okay, and some sort of sexual reproduction. कैसे? By adopting primitive type of DNA from one bacteria to other bacteria. Okay, next point, mycoplasma. Okay, so mycoplasma is a 0.3 micrometer in diameter. ये यहाँ पे नहीं दिया है, पर सेल वाले चैप्टर में दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे डाल दिया एक ही जगह. So mycoplasma is a 0.3 micrometer in diameter and completely lack of cell wall, and are smallest living cell known, and can survive without oxygen and pathogenic in plant and animal. Okay, in many plants and animal, not all. Okay, next point, protista. Protista क्या है? Protista, all protista are the unicellular eukaryotes. Okay, and protista का जो example क्या क्या? Chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans. Okay, and protista are primarily aquatic and form link with a plant, animal and fungi. Okay, and protista reproduce sexually and asexually by the cell fusion and zygote formation. ये important है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स को सिंपली प्लैंकटन बोल सकते हो. ओके, सो क्राइसोफाइट्स पे क्या? क्राइसोफाइट्स इंक्लूड डायटम्स एंड desmids. Desmids क्या है? Desmids are the golden algae, and chrysophytes are aquatic and float passively in the water current.
एग्जाम्पल क्या है, प्लैंकटन, ओके, and बोला था ना प्लैंक, and mostly photosynthetic, okay, they are mostly photosynthetic, cryophytes are mostly photosynthetic, and soap like appearance किसका है, diatoms का, okay, and diatoms का जो cell wall है which is embedded with the silica, that's why it is indestructible, okay, इसे destruct नहीं किया जा सकता, that's why it is indestructible, and that's why after the death of a particular that diatoms, their cell wall are deposited in their habitat, okay, and it form a large mass which is known as diatomaceous earth, and this mass of the cell wall uh, being gritty, किसमें यूज होता है, in polishing and filtration of the oil and the syrup, okay, and the diatoms are the chief producer of the ocean, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, okay, important point. नेक्स्ट पॉइंट, डिनोफ्लैगेलेट्स, सो डिनोफ्लैगेलेट्स में क्या है, क्या पॉइंट है जहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, दे आर मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक एंड पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल, ओके, एंड डिनोफ्लैगेलेट्स में क्या, सेल वॉल हैव स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट ऑन द आउटर सरफेस, ओके, ऑन द आउटर सरफेस, एंड मोस्टली हैव टू फ्लैजेला, मोस्टली हैव टू फ्लैजेला, जिसमें से क्या, वन इज longitudinally and another is transversely uh, arranged in furrow between the wall plates, okay, okay, और example क्या दिया है, red dinoflagellates goniolex which goes into rapid multiplication that make the sea appear like red, and it is known as red tide, जो कि टॉक्सिक होता है and kill the other marine animals like fishes, okay. नेक्स्ट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यूग्लिनॉइड्स में कि यूग्लिनॉइड्स इज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ओके, and they mostly present in the fresh water, okay, like in stagnant रुका हुआ वाटर, जो तालाब का पानी है रुका हुआ, stagnant water, okay, and instead of the cell wall they have a protein rich layer pellicle, okay, which make their body flexible, जो कि instead of cell wall के जगह प्रेजेंट रहता है, and they have two flagella, one long and one short, okay, and how this euglenoids become connecting link between plant and animal, because in the presence of the sunlight, ये जो euglenoids है are photosynthetic, okay, the presence of the sunlight they are photosynthetic, but जब भी sunlight नहीं रहेगा ये predation करता है on the other smaller organism, तो फिर वो heterotrophic बन जाता है, that's why they are connecting link between plant and animal, okay, and pigment of the euglenoids are identical to those of the plants, और उसका एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना, ओके, यूग्लिनोइड्स का एग्जाम्पल है यूग्लिना, ओके, सो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म, नेक्स्ट पार्ट बाकी बाद में करेंगे, सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड ऑल्सो थैंक यू इस चैनल को देखने के लिए, और एक बात, यहाँ पे जितना भी पॉइंट है वो टू द टॉपिक वाइज एनसीईआरटी से उठाया गया है, और यहीं से क्वेश्चन बनने की 100% चांस है, तो मिस मत करिएगा, दिस इज द बेस्ट कंटेंट, लाइक लास्ट में, सबसे लास्ट में रिवीजन करने के लिए, ओके, एंड पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा, एंड और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो टेबल से एनसीईआरटी में वो कर लीजिएगा, वो तो नहीं लिखा पर वो खुद से करना पड़ेगा, दैट आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ओके, थैंक यू।